चलिए, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल में हूँ राम प्रकाश गौतम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इस टॉपिक पे हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। तो जो पोर्टल के थ्रू जो गवर्नमेंट ने अपना वीडियो दिया है, उसी वीडियो को मैं प्ले करके आपको लिए एक मर्ज वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए और आप इस पे सही से काम कर सके। तो हम चलते हैं लेकर के आपको। ये रहा अपना, देखिए अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो है, इनके लिए फॉर्म GST REG-01 कैसे फाइल किया जाएगा, इसका दो वीडियो इन्होंने दो पार्ट में बनाया है। पार्ट ए एप्लीकेशन फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स एंड पार्ट बी फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए ही है एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से फाइल करना है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। Registering with GST is a simple two-stage process consisting of Part A and Part B of the registration application. This video will introduce you to Part A of the registration application. To begin, access the GST website www.gst.gov.in. यानी कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आप www.gst.gov.in ये URL डालिए पोर्टल पे गूगल में, और आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं हमने। From the home page, open the Services menu, click the Registration category and select New Registration option. इसको क्लिक करिए। Note that the fields marked with a red color dot are mandatory fields. Select New Registration and provide your basic information including the permanent account number, PAN. Make sure to enter a valid email address and Indian mobile phone number. Since the GST portal will communicate one-time passwords, OTPs, and notifications at this address and mobile phone number. Clicking Proceed will send two different OTPs on your mobile and email address. दो OTP आएगा और वो On the next OTP page, आपको डालना। enter the OTP received on mobile phone number in the mobile OTP field and the one received in the email OTP field and click Proceed. This will complete Part A of the registration app. अब इससे क्या हो गया कि आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिसको TRN नंबर कहते हैं, ये आपको मिल जाता है। अब इसके बाद ये 15 दिन का टाइम देता है, तो इसके लिए इन्होंने दूसरा पार्ट बनाया है, पार्ट बी। उस पर हम आपको लेके चलते हैं, उसको सीखते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप समझ लीजिएगा इसको, तो इसलिए मैंने कहा कि पोर्टल के डायरेक्ट हम लेते हैं। तो चलिए पार्ट बी अब एक बार हम देख लेते हैं कैसे करना है, इसको समझिएगा ध्यान। This video will introduce you to Part B of the registration application. To begin, access the GST website www.gst.gov.in. From the home page, open the Services menu. Click the Registration category and select New Registration option. Select the Temporary Reference Number option and enter. क्योंकि टेम्पोररी रेफरेंस नंबर पार्ट ए में आपने देखा था, आपको TRN नंबर मिल गया था, उसी TRN नंबर से सेलेक्ट करके अब आपको यहाँ पे TRN नंबर इंटर करना है और फिर कैप्चा करेंगे। कैप्चा करने के बाद फिर आगे प्रोसेस होगा, OTP वगैरह आएगा। OTP ध्यान रखिएगा, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी इसमें दीजिए जो आपके पास एक्टिव है। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं। Enter the TRN that was generated on submitting Part A of the registration application. Enter the CAPTCHA as usual and click Proceed. This will trigger an OTP. Enter the OTP received and proceed further.
Notice the status of the registration application shows as draft. Go ahead and click the Edit icon. Part B has 10 sections, with each section containing multiple fields that need to be filled up. Make sure to fill out all the mandatory fields, otherwise you will not be able to complete Part B. You get 15 days to fill and submit this application. In the Business Details section, provide the basic details of your business. Be careful when you select the constitution of business from the available options. पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड वो इसमें Click से the link select to find out your central jurisdiction. Fill out rest of the fields and add information about your existing GST registrations, if any. Click Save and continue to save this information. Notice the Business Details section's color has now changed to blue and also has a tick on it, indicating the section is filled. You can now navigate to any section of the application and start filling the application. In the Promoter or Partners section, enter the personal information, identity information, and the residential address of the partner or promoter. In case of director, enter the director identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs. Next, upload the photograph of the person whose information is provided. Make sure the photograph is in JPEG format and size is less than 100 KB. In the Other Information section, select the slider to Yes if this person needs to be an authorized signatory also. Let's keep it as No for now. The next section allows entering details of the authorized signatories. Set the primary authorized signatory and enter relevant personal information. Provide identity information, residential address with PIN code, and upload necessary proof of authorization as signatory along with a photograph. Make sure the photograph is in JPEG format and size is less than 100 KB. You can add multiple authorized signatories by clicking the Add New button and adding the details. Click Save and continue to save this information. In the next section, you may enter details of any authorized representative if desired. Else, move to the next section, Principal Place of Business. GST practitioner हो सकता है आपका Here, जो authorized provide the department address of your business premises, the contact information of the given location, nature of possession of the premise, and a document that supports this information. Make sure the document is in PDF or JPEG format and size is less than 1 MB. In case of the principal place of business is neither on rent nor on premise, select the other option and upload a no objection certificate (NOC) from the owner of the premises. Next, enter the nature of your business. Similarly, add the details of additional place of business in case you carry out business from multiple premises. Move on to the next section on goods and services related information. In this section, provide information related to 5 primary goods and services that you supply. Enter the name of the goods and services and the HSN code Harmonized System of Nomenclature code will be displayed. Move on to the next section on bank accounts.
This section requires the details of at least one bank account that you are using for business purposes. करेंट अकाउंट का डिटेल डाल सकते हैं आप। Once you fill out the bank details, upload a supporting document such as the scanned copy of a cancelled check leaf, the account statement, or a copy of the passbook's first page. पेज को स्कैन करके You may add more than one account also if you want. Link to find the IFSC code of the bank. In the next section, you may provide any state-specific information if desired. Else, you can jump to the last section of the application to verify that the information furnished is true and correct to have a legal binding. Once done, submit the application. For companies and limited liability partnerships, LLPs, it is mandatory to submit the application using the PAN-based Class 2 or 3 Digital Signature Certificate (DSC). But before submitting the application using DSC, the DSC needs to be registered using the Register DSC service on the portal. Alternatively, the application can be submitted using the e-sign or Electronic Verification Code (EVC) option. Both these services require you to enter the OTP for authentication. In case of e-sign, OTP will be sent to the mobile phone number registered with the Aadhaar database. In case of EVC, OTP will be sent to the registered mobile phone number of the authorized signatory. Agree to the warning message, which says that all your furnished information is subject to verification and scrutiny. सेलेक्ट करके DSC लगाइए। Upon successfully submitting Part B of the registration application, an acknowledgement reference number ARN will be displayed as well as sent on your mobile phone number and email address. If you go to the Saved Applications section in the GST portal and find your submitted application, you will notice that the status has changed to Pending for Verification. It's that simple. तो बहुत आसान तरीका है। नॉर्मल जो आप न्यू टैक्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं GST का, तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आई होप कि आपको सही समझ में आ जाएगा। और ये GST पोर्टल ने ही अपना वीडियो डाल रखा है, तो उसी वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाया हूँ। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपका तो आप हमें भेज सकते हैं 8448610923 पे व्हाट्सएप करके। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है अमेंडमेंट वगैरह वाला, या कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो गया है किसी का, तो उसको किस तरह से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम आपके बीच अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।